Good evening to all those students who have selected English as method of teaching subject. PSS 01, Unit 1, Paper 7A, Lecture 35, Health. Question: write about the advantages and importance of learning English. Answer: the importance of learning English is increasing day by day rapidly in our life because modern age is the age of globalization. It may be either communication or trade or commerce or bank transaction, etc. So proficiency in English has become the crying need of the hour. The following are the reasons behind its importance. Number one, English as an official language. English has been the official language of our country for more than 200 years. Not only this, it has been declared as the associate official language by an act of parliament in 1963 for an indefinite period. So, all the administrative works of India are done in English even today. पहला है, इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसका महत्व है। यह हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज रही है 2000 ईयर्स तक। इतना ही नहीं, इसको भारतीय संसद ने अधिनियम बनाकर 1963 में अनिश्चित काल के लिए एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया है। इसलिए सभी प्रशासनिक काम अंग्रेजी में आज भी किए जाते हैं। नंबर टू, बीइंग ए लैंग्वेज ऑफ जुडिशियरी, सिंस देयर इज नो अदर सुटेबल लैंग्वेज फॉर लीगल बिजनेस। वैधानिक या कानूनी व्यापार के लिए चूंकि कोई दूसरी सुटेबल लैंग्वेज नहीं है, so all the cases are presented and all judgments too given in English in all courts, from lower courts to Supreme Court. इसलिए जितने भी केस मुकदमे प्रस्तुत किए जाते हैं या जितने भी जजमेंट दिए जाते हैं, ये सब अंग्रेजी में दिए जाते हैं सभी कोर्ट्स में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। Number 3, being a language of international trade and industry. अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य व्यवसाय की भाषा के रूप में इंग्लिश dominates the field of trade and industry in the country as well as foreign. Maintenance of accounts, audit and correspondence are done in English very easily. जितना अकाउंट्स का काम होता है, ऑडिट का काम होता है, पत्राचार होता है विदेशों से, ये सब जो है इंग्लिश में बहुत आसानी से कर दिए जाते हैं। नंबर 4, इन सोशल लाइफ टू, सामाजिक जीवन में भी इंग्लिश का महत्व है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोशल लाइफ ऑफ द कंट्री। देश के सामाजिक जीवन में अंग्रेजी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। The highly educated sections of our society find it more convenient to talk in English. Their letters and invitation cards etc. are mostly printed in English. हमारे समाज में जो उच्चतर शिक्षित सेक्शन के लोग हैं, वे अंग्रेजी में बातचीत करना ज़्यादा आरामदेह मानते हैं। उनके यहाँ लेटर्स और इन्विटेशन कार्ड्स भी अंग्रेजी में ही छपाए जाते हैं। इंग्लिश वर्क्स एज ए विंडो फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। नंबर 5, अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, इंग्लिश इज ए विंडो, अंग्रेजी एक खिड़की के रूप में है, through which we can see the scientific, technological, agricultural and commercial developments
taking place in the world. अंग्रेजी एक खिड़की है जिसके द्वारा हम संसार में घटित हो रहे वैज्ञानिक, अभियंत्रण संबंधी, कृषि संबंधी, व्यवसाय संबंधी विकासों को देख सकते हैं. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू. Number 6, being a suitable language for whole of country and abroad. यह पूरे देश के लिए और विदेशों के लिए एक suitable language है. We can go to any part of the country and abroad and communicate our feelings with others if we have good conversation in English. हम लोग अपने देश के किसी भाग में भी जा सकते हैं और अपनी भावनाओं का संप्रेषण कर सकते हैं यदि हमारे पास अंग्रेजी की योग्यता है. इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज दैट कैन हेल्प अस एवरीवेयर. इंग्लिश ही वह भाषा है जो हमारी मदद सब जगह कर सकती है. नो अदर लैंग्वेज हैज सच कैपेसिटी. इसी अन्य भाषा के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. So far as India is concerned, Eastern India, all the states of Purvanchal, there are 7 states in Purvanchal, their official language is English. Southern India, their official language, their language of conversation is English. Only 5 or 6 states of India are there where Hindi is spoken of. For example, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Odisha, Haryana, etc. These are only 5 or 6 states where Hindi is spoken of. If these 5 or 6 states are excluded from the list of states, English is the only language in which all the works are done in the rest states of the country. In number 7, increasing craze towards English. आजकल जो है अंग्रेजी के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ रहा है. We are seeing that English medium schools are being opened day by day, not only in towns but also in rural areas. Parents and guardians get satisfied if their children, if their sons and daughters get admission in English medium schools. At the same place, if someone speaks Hindi, no one is there to listen to him. But if someone speaks in English, any people will stay there and listen to English speaking. It is the fact, though it is the fact that they don't understand that meaning, but they are happy to listen to English speaking. Next, for higher study, if someone student has to go to abroad for higher study, or if he or she had to go to English speaking states in India too, English is must for them. They have to speak English if they want to get admission in
topmost institutions either in India or in abroad. For entering better schools, colleges and universities, if someone wants to get admission in reputed schools, colleges and universities outside the state, they have to be well conversed in English. The students of engineering and medical sciences also need to speak English to do their daily to daily habits in English. Then, for getting lucrative jobs in cities, metropolitan cities, abroad and multinational companies, English is a compulsory qualification for them. Number 11, connecting language for people speaking different dialects and languages. If we go to Nagaland, there we find that dialects differ from family to family. So, it is not possible for a person to know all the dialects, to know all the languages. English is the only language by which we can express our ideas, our emotions, our feelings and get the same from others. So it is a connecting language. It connects the people of different parts of the world, different parts of our country and bring it on one stage. Thanks.